Please welcome Sri Somnath with a thunder of applause. स्वागतम सुस्वागतम। हम सभी मान्यवरों का यहाँ स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती तथा इसरो के साथ जो सामंजस्य करार हुआ था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनवरी 2023 में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष महायात्रा इस प्रयोग की शुरुआत की विदर्भ में 15 अगस्त 2023 में, और तब से आज तक यह अंतरिक्ष महायात्रा ने विदर्भ का प्रवास किया है। आज हम इसके समारोह कार्यक्रम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे यहाँ हमारे चीफ गेस्ट आज के श्री सोमनाथ हमारे बीच आ चुके हैं। हम लोग एक यहाँ पे वीडियो क्लिप क्विकली प्ले करेंगे जो कि ये पूरे विदर्भ के टूर का, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था, त्रिपुरा में जो हुआ था, उसका एक झलक हम सबको देखने को मिलेगी। आकाश, प्लीज प्ले द बीट। हम सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सबका नाम दिए, जहांगीर भाभा के पूरे किए, मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, इसरो 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 इसरो। हर देश में गूंज रहा नए कीर्तिमान, महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा, हुआ पूरा सपना के सारा भाई ने था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते हम नमन, हम नमन। भारत माँ को अर्पित है जीवन, है जीवन। GSLV, PSLV, चंद्रयान और महायान, सरस्वती धवन के योगदान को। एस्ट्रोसैट अब 104, जय जय विज्ञान हो। UR राव सर, किरण कुमार के योगदान को। हम साथ साथ हाथों में हाथ लेके, दिन और रात हम नौजवान मिलके, सबने विश्व गुरु भारत को मान लिया। सलाम तुझे इसरो, जय 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 हो इसरो।
शाबाशिया 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 हम सबके लिए जो जाग रहे, बस साथ हमारा मांग रहे। विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो ने हमें सबका नाम दिए, जहांगीर बाबा के सपने पूरे किए। मंगल पे तिरंगा फहरा दिए। है सलाम तुझे इसरो, है सलाम तुझे इसरो। इसरो 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 हर देश में गूंज रहा। नए कीर्तिमान महाशक्तिमान भारत को बना रहा। इसरो ने भारत का कर दिया है सर ऊंचा। हुआ पूरा सपना भी सारा भाई ने था जो सोचा। ऐसे महापुरुषों को करते हम नमन। मेरे ख्याल से जो प्रोग्राम हुआ है, जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, उसके हिसाब से ये तालियां जरा कम है। और ये तालियां ज़रूर इसरो के लिए है और आप सबके लिए, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना बड़ा इतने ऊंचाई पर लेके गए। आपके पार्टिसिपेशन से, आपके उत्साह से इस सारे माहौल को आपने चेंज कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के सारे अतिथियों को कि वो मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्री सोमनाथ जी, डॉक्टर शेखर मांडे, डॉक्टर प्रकाश चौहान जी, श्री एन सुधीर कुमार जी और डॉक्टर शिव कुमार जी। आइए सर। आकाश, वो इसरो का वीडियो 2 मिनट का, इज इट रेडी? कैन वी प्ले दैट क्विकली? एक 2 मिनट का वो वीडियो भी चला दो।
तो हमने बड़ा वीडियो देखा, उसका ये एक फास्ट फॉरवर्ड वर्शन हमारी इसरो की टीम ने बनाया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश मिश्रा जी एंड उनकी टीम कि उन्होंने ये वीडियो बनाया। अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। तेजी से मैं सारे गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन और भारत माता पूजन के लिए आगे बढ़े। विज्ञान भारती प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विज्ञान भारती प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं अब हम हमारे मान्यवरों की इंट्रोडक्शन और उनका स्वागत करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट जो है एज अ मैन हु डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेकिन बट एज ए फॉर्मेलिटी मैं आपको इन शॉर्ट उनके बारे में 2 लाइनें बताना चाहूँगा कि श्री सोमनाथ took his BTech in Mechanical Engineering from TKM College of Engineering, Kollam, and Masters in Aerospace Engineering from Indian Institute of Science. Sri Somnath assumed the charge of Secretary, Department of Space and Chairman, Space Commission on 14th January 2022. He has published several papers in journals, seminars, etc. And without talking more about him, we will hear him at the end of the program. So I will request our President, Dr. Shekhar Mande, to welcome Shri Somnath.
आज के हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, इनका स्वागत करने के लिए मैं गिरीश जोशी विज्ञान भारती सह कोषाध्यक्ष को विनती करूंगा कि वो आगे आए और डॉक्टर शेखर मांडे जी को वेलकम करें। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका परिचय तो मैं दे सकता हूं, बट एक सबसे अहम परिचय मैं देना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ जो बस आई, हमारे यहाँ जो बस कंटिन्यूस अगस्त 15 तारीख से जो चल रही है और वो आज तक निरंतर हमारे साथ थी, वो आसान काम नहीं है। उसके लिए मेंटेनेंस होता है, उसके लिए कई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना होता है। ये सब को करते हुए हमें कंटिन्यूस ये बस अवेलेबल करके देने वाले हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चौहान, डायरेक्टर NRSC हैदराबाद। मैं विनती करूँगा गुरुनाथ कुंदरगी जी सर को कि वो प्रकाश चौहान सर का स्वागत करें। गुरुनाथ कुंदरगी जी ये विज्ञान भारती विदर्भ प्रांत के एक मेंटर है। Prakash Chauhan sir, he joined Indian Space Research Organization in 1991 at Space Application Center, Ahmedabad. And then prior to joining National Remote Sensing Center, Hyderabad, he was a director at the Institute of Remote Sensing, IIRS, Dehradun. He also served as group director at Space Application Center, Ahmedabad for biological and planetary services groups during 2014 to 2018. We welcome you, sir, and we thank you for all the support and confidence that you had given us for doing this program. Our next guest is N. Sudhir Kumar. He's another person, because of him, all of this we could do. And he's the person with whom Vijnan Bharati and ISRO, we signed the MOU. It was his idea. It was ran through the ISRO, and then he finally made it happen. And because of this MOU, all of these things started rolling, and we did this. N. Sudhir Kumar joined ISRO in 2000 and assumed key roles as developing enterprise software solutions for ISRO for handling procurements, store finance, accounts, and human resources. He has been instrumental in many other activities, but he was deputed for Space Studies program at International Space University, Austria during 2011. He is Director, Capacity Building and Public Outreach Program of ISRO. I request Shashikant Chaudhary ji, another patron from Vijnan Bharati, to welcome him. हमारे बीच आज मंच पर विराजमान है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। मूल रूप से आप हरियाणा से हैं, परंतु पिछले 150 वर्ष से परिवार कोलकाता में निवासित है। और आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से रसायन शास्त्र में PhD की शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ ही आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं। आप 1882 में संघ के प्रचारक निकले। इसके पश्चात नेपाल में संघ के विदेश विभाग की योजना से आप नेपाल में भी प्रचारक रहे हैं। आप विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री के दायित्व पर रहे हैं और वर्तमान में विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। मैं सुयोग गुर्जर से विनती करूंगा कि वो शिव कुमार शर्मा जी का स्वागत करें।
ये जो हमने प्रवास 15 अगस्त 23 में शुरू किया, जो कि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों हुआ, और उसके बाद ये बस का प्रवास निरंतर चलता रहा। हमने वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और अंत में नागपुर में आके कल शाम तक इस बस का प्रवास निरंतर चल रहा था। ये प्रवास में कई हाइज और लोज रहे हैं। लोज इसलिए कि बारिश आ जाती थी तो बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते थे। हाइज इसलिए कि छोटे छोटे गांव में जब बस जाती थी तो बच्चे बड़े भावुक होते थे कि हमारे छोटे से गांव में इसरो की बस आई हुई है। इस सब का ये सब विचार किसी पुस्तक के द्वारा प्रसिद्ध करने के लिए हमने एक स्मरणिका का लॉन्च करने का इस बार प्लान किया था, और उस स्मरणिका का अनावरण करने के लिए मैं हमारे सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी स्मरणिका का अनावरण करे। ये स्मरणिका पूरे विदर्भ के अंतरिक्ष महायात्रा का लेखा जोखा है। इस स्मरणिका को हम जितने स्कूलों में बस को होस्ट किया गया था, बस जहाँ रुकी थी, वो सब स्कूलों को भी दिया जाएगा। हमारे जितने सपोर्टर्स हैं उनको दिया जाएगा, और इसरो के ऑफिसेस में भी इस स्मरणिका का रखी जाएगी, सबको भेजी जाएगी। इसके बाद हमको हमेशा ये हम प्रवास करते हैं, बस जहाँ जहाँ जाती है वहाँ से फीडबैक मिलता है, लेकिन सब ऑडियंस के साथ जितने भी लोग यहाँ हैं उनके साथ अगर हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो इससे अच्छी कौन सी बात होगी कि जिस बच्चे ने इस बस को देखा भी हो, उस बच्चे ने उस बस में एज ए वॉलेंटियर भी काम किया हो, जो कि बाकी आए हुए बच्चों को एक्सप्लेन करके बताया है। ऐसा एक हमारे साथ म्युनिसिपल जूनियर कॉलेज अचलपुर से 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला सौरभ वैद्य है। मैं उससे विनती करूंगा कि वो आगे आए और अपने अनुभव सबके सामने साझा करें। सौरभ। A very good afternoon to all respected dignities, personalities and science fascinated students. Myself, Saurabh Narayan Vaidya, student of standard 11th from Municipal Junior College of Science, Paratwada, District Amravati. ISRO व विभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अंतरिक्ष महायात्रा स्पेस ऑन व्हील्स ह्या उपक्रमाने आमच्यासारख्या छोट्या शहरांमधून ग्रामीण भागातून बिलॉंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन जागा केला आहे। कारण अंतराळ विश्वाचं कधीही न पाहिलेलं, कधीही न अनुभवलेलं आणि कधी अनपेक्षित असं सुंदर जग एका स्वप्नासारखं आम्ही या मोहिमेतून अनुभवलेलं आहे। माझ्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या बसमध्ये व्हॉलंटियर म्हणून काम केलं होतं, पण ते काम करण्यासाठी आम्हाला ती स्टडी करावी लागली होती। आम्हाला जे ऑडिओ व्हिडिओच्या स्वरूपामध्ये आम्हाला जी माहिती होती ती सर्व माहिती आम्हाला आधी स्टडी करावी लागली होती, आणि यामुळे स्पेस मिशन्स विषयीच्या सगळ्या कॉन्सेप्ट्स आमच्या विद्यार्थ्यांच्या क्लिअर झाल्या आहेत। आणि मला व माझ्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांना असा अभिमान वाटतो की आम्ही इस्रोसारख्या मोठ्या संघटनेची कामगिरी सामान्य लोक व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये एक दुवा, एक लिंक म्हणून काम केलं, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो। बसमध्ये येणारे लोक, तो विद्यार्थी असो, तो प्रोफेशनल वर्ल्डमध्ये बिलॉंग करणारा व्यक्ती असो की सामान्य नागरिक असो, प्रत्येक नागरिकाच्या डोळ्यामध्ये देशाबद्दल, इस्रोबद्दल आणि इस्रोच्या वैज्ञानिकाबद्दल त्यांनी केलेल्या कामगिरीबद्दल अभिमान झळकत होतं, व हे मी व माझ्यासारख्या अनेक व्हॉलेंटियर्सनी स्वतः अनुभवलेलं आहे।
देशाला व इस्रोला सामान्य नागरिकांचा कसा पाठिंबा आहे, कसा सपोर्ट आहे, हे आम्ही यातून आमच्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. अ नेशन विथ अ स्ट्रॉंग बेस इन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज अ नेशन विथ अ स्ट्रॉंग बॅकबोन. आणि ही बॅकबोन ग्रामीण भागापासून तयार करण्याचं काम विभावा इस्रो यांच्या इनिशिएटिव्हने केलं आहे. स्पेस हा विषय लहान मुलांसाठी कुतूहलाचा असतो. या मिशनमुळे, या उपक्रमामुळे आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोटिवेशन व इन्स्पिरेशन आम्हाला यामधून मिळालेलं आहे. जिज्ञासा प्रत्येकामध्ये निर्माण झाली आहे. जिथे जिथे ही बस गेली असेल, तिथे तिथे ही बस एक दिवस जरी थांबली असेल तरी त्या एका दिवसाच्या कालावधीमध्ये या बसमध्ये जेवढेही विद्यार्थी आले असतील त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात या बसने एक शास्त्रज्ञ जन्माला घातलेला आहे. आणि याची खात्री आहे की पुढे जाऊन हा मनात जन्मलेला शास्त्रज्ञ खऱ्यात उतरेल व देशाला एक ब्रिलियंट माइंड्स असणारे सायंटिस्ट मिळतील व जे देशाचं नाव मोठं करतील. जिथे जिज्ञासा आहे तिथे शोध आहे. जिथे शोध आहे तिथे विज्ञान आहे. जिथे विज्ञान आहे तिथे प्रगती आहे. व जिथे प्रगती आहे तिथे मानव कल्याण व राष्ट्राची प्रगती आहे. भविष्यामध्ये इस्रो व विभा हे आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातल्या तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांसाठी असेच माहितीपूर्वक, नॉलेज रिच व एक्सपिरियन्स रिच असे उपक्रम राबवतील याची आम्हाला खात्री आहे. मला एवढ्या मोठ्या मंचावर बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली यासाठी मी विज्ञान भारतीचे सेक्रेटरी आदरणीय नरेश चाफेकर सर यांचे मनापासून आभार मानतो. तसेच आम्हाला हा एक्सपिरियन्स रिच आणि नॉलेज रिच एक्सपिरियन्स दिल्याबद्दल इस्रोच्या व विभाच्या सर्व टीमचे, ज्यांनी इनडायरेक्टली व डायरेक्टली यामध्ये आमच्यासोबत कोऑर्डिनेशन केलं आहे, त्यांचेसुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. त्याचबरोबर माझे वर्गशिक्षक खान सर, ज्यांनी मला आज इथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रेरणा दिली, सपोर्ट केला, त्यांचेसुद्धा मी आभार मानतो. माझ्या महाविद्यालयाची सुद्धा मी आभार मानतो व भारत मातेला वंदन करून माझ्या शब्दांना विराम देतो. धन्यवाद. थँक्यू. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये इसरो और विज्ञान भारती के बीच हुआ सामंजस्य करार, जिस व्यक्ति ने साइन किया, जिन्होंने इसमें एक बहुत ये किया, इनिशिएटिव लिया और आगे चल के भी ये बस का प्रवास निरंतर चलता रहे, इसके लिए हमें मदद की, ऐसे सुधीर कुमार जी बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं. उनके साथ काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला. हमेशा हंसमुख ऐसे, और खुद तो एनर्जेटिक है ही, बाकी लोगों को भी बहुत एनर्जी दे जाते हैं. ऐसे इसरो CBPO के डायरेक्टर श्री सुधीर कुमार जी को मैं विनती करूंगा कि वो आपके सामने अपने विचार रखें. Thank you, Naresh ji. After seeing the crowd and after seeing that video, now I think I have yearned to tell you and claim that this particular bus was conceived, designed and realized by me. And not only the bus, because so far we never claim that we have done, I have done, because I am so emotional after seeing this one. Now whatever the effort that we have taken, I want to tell you the small, how it is conceived. As a part of Vikram Sarabhai centenary program in 2019, government has given us mandate to celebrate Vikram Sarabhai, who is father of space program, in a big way across the country. At that time, it's a government's instruction that we have to realize 6 buses. There was an apex committee. When we were thinking, the NCSM bus was the inspiration. When I have seen the NCS bus, it was quite small, 8-meter chassis. When they were telling it will not go to the rural areas, it is very difficult. Then when we have gone, it was very congested, many people cannot see. Then I have gone to different places, I have seen how actually bus can be expanded, some designs were there. Ultimately in Chandigarh, one guy who was there, JCBL Limited, he has agreed to realize this 6 number of these buses within 3 months. Just imagine, 3 months, including the models, including the dioramas, including the working models, including the audio visual, whatever has been created. And the effort 2 days before, 3 days before it was supposed to see off from Chandigarh to Ahmedabad for launching, when I just called, Satish is here, the boy who day and night worked. Can you stand, Satish? The boy who had day and night worked with his own banian and chaddi
working in this bus in a shop work floor, he has given me an indication, no, ho nahi payega. Then I immediately flown from Bangalore. And 12 hours we have worked to make this bus, to make it ready. And it was supposed to go on road. Then JCBL decided, no, it cannot go on road because so a lot of exhibits are there. They have hired a low bed tractor, the trailer, and load it on that one in a maximum with a reasonable speed. It has reached Ahmedabad in 5 days. Conceiving a bus and realizing a bus is one aspect of it. It is like ISRO gold. But adding suvasan, flavor to that one, that Vibha has given. In the 4 years, the same bus has moved across the country during World Space Weeks or during the events. And millions of kilometers and lakhs of students have visited the bus. But the glory what has achieved today with this patronage, never achieved. I think that is the ISRO's belief that when cooperation and collaboration happens, we reach the ultimate. That is like Chandrayaan 3. So thanks a lot for Vibha, thanks a lot for the volunteers, thanks a lot for the students who made this program. We hope that this program forever, and it has set a role, ISRO has set a role in all scientific S&T departments that we can reach out the science to the rural villages, to the students. You have seen the videos, how students, kids, small boys and girls stood in the queue. Nothing is there. If you just see maybe a couple of things, you can go it in Google also. But the inspiration that ISRO has come to us, that is the motive behind learning and inspiration. If you inspire, the good teacher inspires. The bad teacher explains. That the teacher that is the inspiration is more important. If each and every one student who has seen in the mob of 100, if he get inspired towards science and STEM, if he pursues his education, his career in spend, I think whatever couple of lakhs or crores that we have spent for these buses, I think we have usually launcher, if 200 crores, if it is roughly it costs, it generates 2,000 crores business or even more. That is what this bus has earned and given the intangible benefit of lakhs or 10 times the cost of the vehicle towards giving away the science and enthusiasm and interest that is created by ISRO reaching out to the people. I thank Vibha again. I hope that this relationship will continue. I hope that other parts of the country also, with the support of our chairman and other centers because we have given these buses to the different centers, different regions, to all regions they are doing well. But similar functions will happen in each and every region. That will inspire, rather that will set a role for other S&T departments like DST, DBT, DAE, other scientific departments to come out such kind of innovative models to reach out science to the students. Thanks a lot for giving an opportunity to speak with you in front of you. Thank you. Jai Hind. Thank you, Sudhiji. We have heard from Saurabh his feedback, so we would like now to hear from one of the teachers. And let me tell you, when we started this, the inauguration was on 15th of August, and then first place that we took the bus was to Hinganghat. And in Hinganghat, at that time, we were not very clear about how the bus is, how it's going to work out, how the students will come, how the response will be. There were a lot of unknowns. We didn't know how we are going to organize the competitions. ये जो competition हम लेंगे, वो competition में हमको प्रतिस्पर्धी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनको evaluation कैसा किया जाएगा, इतने सारे unknowns के साथ हम लोगों ने approach किया था भारतीय विद्या भवन गिरधार दास मोहता विद्या मंदिर हिंगणघाट में, और उनको हमने बताया कि ऐसा 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 हमारा आइडिया है, इतनी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, हमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस इसका नहीं है, तो क्या आप पहले होस्ट बनना चाहेंगे। और उनका
बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, पूरी स्कूल की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो क्यों ना हम उनके जो डायरेक्टर है उनसे सुने कि क्या उनका अनुभव रहा इस अंतरिक्षम महायात्रा के बारे में, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आशीष कुमार सर, भारतीय विद्या भवन हिंगन घाट के, टू शेयर हिज थॉट्स। थैंक यू नरेश जी। सर्वप्रथम मेरी मातृभूमि को मेरा नमन। इसके पश्चात मैं उन सारे गुरुओं का नमन करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होकर इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कह सकूं। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, श्री सोमनाथ जी, चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग, श्री शेखर माड़े जी, श्री प्रकाश चौहान जी, श्री एन सुधीर कुमार जी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, and the galaxy of intellectual personalities, dear students, नमस्ते। मुझे गर्व है कि विदर्भा में फर्स्ट लैंडिंग ऑफ दिस स्पेस ऑन व्हील बस हिंगन घाट में हुआ और मुझे ये मौका मिला। और जब मैं नरेश जी से मिला और नरेश जी ने मुझे जब सारी बातें कहीं, और इस बस के लैंडिंग के पहले हमने जितनी मीटिंग्स की, उससे मुझे ये पता चला कि इट इज़ नॉट ओनली एन इवेंट, एक मिशन है, इसके पीछे एक विज़न है और उसे हमें पूरा करना है। हम हिंगन घाट इज़ अ तालुका प्लेस इन अ वर्धा डिस्ट्रिक्ट। हम उस तालुका के हर स्कूल में विजिट किए और हमने पर्पस बताया कि स्पेस ऑन व्हील बस क्यों आई हुई है और आपका विजिट करना क्यों जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूसली 1 वीक करते रहे, हर स्कूल में जाते रहे, बताते रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमने ये पर्पस, ये विज़न, ये मिशन हर स्कूल में रखा, गांव के छोटे छोटे स्कूलों में गए, हम एजुकेशन ऑफिसर्स से मिले, सबने हमको इतना सहयोग किया जो मैं यहाँ शब्दों में बता नहीं सकता। We invited all schools, their parents, और जब मैं यहाँ पे देख रहा था कि 5 लाख लोगों ने विजिट किया बच्चे, उसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हिंगन घाट का रहा। 4,700 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एडेड, नॉन एडेड स्कूल्स के बच्चों ने विजिट किया। Yes, one day it was tough time because the bus was there for 3 days, and the 3rd day it was raining heavily. But can you believe, though it was raining heavily, all children, small kids, with their parents, they were on the queue. They were having curiosity to know, क्योंकि हमने बताया था ये स्पेस उस बस के द्वारा हमारे स्कूल के आंगन में आ रहा है, जो आपको देखना है, जो आपको समझना है। हमने अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, बच्चों को ट्रेनिंग दिया। मोस्ट ऑफ टाइम हमने बच्चों को आगे रखा। इस विजन और मिशन को पूरा करने के लिए साइंस से रिलेटेड कई एक्टिविटीज की गई। इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर रंगोलियां बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, हमने डिबेट्स रखे। इफ आई रिमेंबर, हैदराबाद से हमने साइंटिस्ट को इनवाइट किया। स्टिल आई रिमेंबर अ डे that talk with the scientists only for standard 9th and 10th. After that talk, immediately students of standard 6 and 7 turn up to my office कि सर हमको भी बात करनी है, हम क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, क्यों ये केवल 9th, 10th, 11th के लिए है। हमने 6th, 7th के बच्चों को भी वहाँ पे इन्वॉल्व किया। आउटकम्स अगर मैं कहूँ, इस शानदार अनुभव के साथ हमने एक पर्सनालिटी
डेवलपमेंट की अभी एक क्लासेस की, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यस, ये विज़न एंड मिशन कामयाब हुआ है। क्योंकि 10th के जितने बच्चे इस साल बोर्ड में अपीयर हुए, उसमें से ऑलमोस्ट 20 चिल्ड्रन दे सेड मी दे वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। ये मेरे लिए अचीवमेंट था, ये इस विजन एंड मिशन का अचीवमेंट था। और इस सारे अचीवमेंट के लिए मैं विभा और इसरो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्पेस ऑन व्हील के माध्यम से स्पेस को हर स्कूल के आंगन में पहुंचाने की प्रयत्न किया। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सर। सच में दोज इनिशियल डेज वेयर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और डेली हम लोग इंटरेक्शन करते थे, प्लानिंग करते थे, कुछ होता था कुछ नहीं होता था, बट दैट वाज फन। डूइंग द फर्स्ट स्पेस ऑन व्हील्स एक्सपीरियंस वो बहुत बढ़िया था। ये सब करने के पीछे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा। आज एक और पर्सनालिटी है जो स्टेज पे नहीं है, बट ही हैज़ हेल्प्ड अस इमेंसली इन ऑल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन। कभी कभी रात को लेट भी हम उनको फ़ोन करते थे, कभी कोई डिफ़िकल्टी आए, इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम वी यूज्ड टू कॉल हिम डे एंड नाइट, एंड एवरी टाइम ही वुड बी वेरी पेशेंट, वेरी calm and very positive, and he would always say, okay, don't, no problem, you just drop me an email, I'll talk to the Prakash Chauhan sir and I'll get it done. ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में आज है। I will request him to please stand up and introduce, I'll introduce you, G.S. Rao sir. Please stand up here. He has immensely helped us in all of this organization. ये 6 महीने जो बस हमारे साथ है वो अब काफ़ी क्रेडिट सर को जाता है। सर थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, धन्यवाद। और जी.एस. राव सर ये सब कर सकते थे क्योंकि उनके बॉस वो भी उतने भी पॉजिटिव थे, जो कि डॉक्टर प्रकाश चौहान सर जो हमारे बीच में है। मैं प्रकाश चौहान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर यहाँ आके हमको मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मंच पर आसीन श्री सोमनाथ जी, सचिव अंतरिक्ष विभाग, डॉक्टर शेखर मांडे जी, शिव कुमार शर्मा जी, सुधीर कुमार जी, सभागार में उपस्थित सभी विभाग के गणमान्य सदस्य, साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण है जितने बच्चे आज इस सभागार में उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक शुभेच्छा। आज इस अवसर पर जो विभाग की तरफ से वीडियो शुरू में दिखाया गया और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमारी इस स्पेस ऑन व्हील बस को मिला, उस वीडियो को देखकर मेरा मन बहुत अभिभूत हो गया कि एक प्रयास जो कि हमने विक्रम साराभाई सेंटेनरी कार्यक्रम के तहत, जैसा सुधीर जी ने बताया कि 6 बसें, सिर्फ 6 बसें, 140 करोड़ का देश है तो 6 बस बहुत छोटी चीज़ होती है। तो एक छोटा प्रयास था, लेकिन छोटे छोटे प्रयास कितना महत्वपूर्ण उसका आउटकम हो सकता है, ये हमारे सामंजस्य से जो इसरो, NRSC और विभाग के द्वारा हुआ, ये उसका जीता जागता प्रमाण आज हमने आप सभी ने के सामने देखा। So I would like to thank and celebrate and congratulate this cooperative spirit of Vibha, ISRO, and of course my colleagues from NRSC for having done this wonderful work. भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के विजन से शुरू हुआ था और डॉक्टर साराभाई का विजन था कि अंतरिक्ष का प्रयोग भारत के विकास में करना चाहिए। और पूरा हमारा जो कार्यक्रम था वो एक स्पेस एप्लीकेशन सेंट्रिक कार्यक्रम है अभी भी। और भारत 70% भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। तो अगर हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं कि 2047 तक अगर हम विकसित भारत चाहते हैं, तो उसमें हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और उस महत्वपूर्ण योगदान को पूरा करने में विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना विकास अधूरा है। इस क्रम में
वैज्ञानिक सोच को रूरल एरियाज़ तक ले जाने के लिए, हमारे रूरल एरियाज़ के युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोटिवेशन मिला है वो शायद अतुलनीय है, अकल्पनीय है। हम लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे जिस तरह का आज हमने यहाँ पर वीडियो में जिस तरह की इमेजेस देखी हैं। मैं अपने साथियों से, खासकर GS राव जी से हमेशा पूछा करता था कि हमारी बस कहाँ है, क्योंकि हमको अपने प्रोग्राम भी करने होते हैं। वी नीड टू डू आवर ओन एक्टिविटीज़ ऑल्सो, एंड मैनी टाइम्स दिस बस यूज टू बी देयर इन विदर्भा रीजन. But after seeing today's response to this program, all those sacrifices which we made for our activities at Hyderabad, I think they were worth doing it. That's what I can say without any doubt. Let me tell you, friends, at this movement, this bus is one aspect where ISRO and centers of ISRO are engaged in the outreach program of space technology in this country. At the same time, we are also doing multiple activities. At NRSC itself, we have made a separate campus for training and outreach purposes, because a large amount of ecosystem in space economy is developing in this country. The government has adopted a new space policy. Private sector participation in both upstream and downstream segments is increasing, and especially to cater to the requirement of the down segment stream of space applications, we are conducting large amount of training programs as well as outreach programs, not only through this space bus, but by multiple means, using online platforms, in-person programs, and of course, aiming towards developing the skill set among the youths of this country, so that they can basically, if they want to take up some entrepreneurship or some kind of startup things, we can handhold them. So I would also use this platform to say that some of you, those who are really keen to pursue space-related activities, can get in touch with us. Definitely we will be there to help you out in achieving your dreams. With these words, once again I would like to thank BIVA as well as our Honorable Secretary and Chairman Sri Somnath ji for giving this wonderful support. And I would also urge that I think we need many more buses, and we have to augment these programs after seeing the popularity of this particular event. Thank you very much, and thanks to entire team of BIVA for wonderfully coordinating these activities along with ISRO. Thanks a lot. थैंक यू सर. हमें प्रयास करते रहना है. वैज्ञानिक कहीं से भी आ सकते हैं, वैसे ही कलाकार भी कहीं से भी आ सकते हैं. हमारे बीच में आज एक ऐसे ही कलाकार है, उनका नाम है राहुल बोवारे. ये कैंटीन में हाउसकीपिंग का काम करते हैं, लेकिन कला उनके हाथ उंगलियों में बसी हुई है. उन्होंने एक सोमनाथ सर का एक स्केच बनाया हुआ है, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए, सोमनाथ सर को प्रेजेंट करें और वो हम सबको देखने को मिले. राहुल, प्लीज़ कम. आज यहाँ विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे हमारे यहाँ साथ है. डॉक्टर शेखर मांडे इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड computational biologist and a well-known research scientist. He is a distinguished professor at Savitribai Phule Pune University. Prior to this, Dr. Shekhar Mande was a Director General of Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, and Secretary of Department of Scientific and Industrial Research, that is DSIR. In 2005, he was awarded the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology in category of Biological Sciences, and he is from Nagpur. Please welcome Dr. Shekhar Mande.
मंच पर उपस्थित सोमनाथ जी, चौहान जी, सुधीर जी, शिव कुमार जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी गणमान्य, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, शिक्षकगण और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ उपस्थित सभी युवा वैज्ञानिकों, ये विज्ञान भारती के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज इस कार्यक्रम का समापन जैसे हो रहा है जो 15 अगस्त को शुरू हुआ था, और आपने एक छोटी सी क्लिप में देखा है कि किस तरह इसे प्रतिसाद मिला है, और मैं समझता हूँ इस तरह का प्रतिसाद पूरे देश में सिर्फ विदर्भ में ही मिल सकता है। विज्ञान भारती का सतत प्रयास रहा है कई वर्षों से, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि विज्ञान भारती की शुरुआत यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, करीबन 15 किलोमीटर दूर 1991 में शुरू हुई थी। और विज्ञान भारती का प्रयास ये रहा है कि हमारे देश में विज्ञान की जो उपलब्धियाँ होती है वो समाज के सामने में हम किस तरह ले आएँ, और इस दिशा में विज्ञान भारती कई अनेक कार्यक्रम पूरे वर्ष करते रहती है अलग अलग देश के कोनों में। और इसी प्रयास में इसरो के साथ मिलजुल कर ये जो बस हम लोगों ने विदर्भ में चलाई थी, ये इस प्रयास का एक अंश वही है। मुख्य अंग ये है कि विज्ञान को हम लोग किस तरह से एक स्वदेशी भावना से देखें। हमारे देश की विज्ञान जगत में क्या उपलब्धियां हैं उसको हम लोग किस तरह आपके सामने में ले आए, ये एक मुख्य अंश विज्ञान भारती का रहा है। और आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि महामारी के समय कई ऐसी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि हमारे देश में एक इंडिजिनस वैक्सीन, हमारे देश पे एक अपना टीका हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया था, उसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुई थी। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि भारत मात्र दूसरा देश बना करीबन 303 वर्ष पूर्व जिसने अपना बनाया हुआ एक बायोजेट फ्यूल वो हमारे हवाई जहाज़ों पे लगाकर हवाई जहाज़ उड़ाया था, मात्र दूसरा देश पूरे जगत में। और इस कॉन्फिडेंस से लेके हमारे वैज्ञानिक आजकल जो कुछ काम कर रहे हैं, इसी दिशा में आजकल में आप लोगों ने जो सुना होगा एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई है वो चंद्रयान की है, और वो सब आप लोगों ने देखा ही है। और हमारा सौभाग्य है कि इस मिशन को जिन्होंने लीड किया था वो सोमनाथ जी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं विज्ञान भारती की ओर से और सभी की ओर से श्री सोमनाथ जी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे लिए ये संयोग की बात है कि आज किसी अन्य कारण वजह मुझे नागपुर आना पड़ा, और मेरा सौभाग्य ये है कि यह कार्यक्रम का आयोजन भी आज ही किया गया, और विदर्भ के विज्ञान भारती के कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि कार्यक्रम होने वाला है, तो उनको मैंने सबसे पहले बताया कि अगर सोमनाथ जी यहाँ खुद उपस्थित है और आज इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये बस का जो इतना यशस्वी कार्यक्रम रहा है, तो इस कार्यक्रम को तो मैं ज़रूर मिस नहीं कर पाऊँगा, तो मैं खुद ही यहाँ पे चला आया। और आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए हो। और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आज उपस्थित जो युवा वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, जो स्कूल के छात्र हैं, वो हमारे देश के भविष्य में और भी आगे बढ़कर विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, होमी बाबा ऐसा नाम हमारे देश का ऊंचा करेंगे। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आपकी शुभकामनाओं के साथ मेरे 2 शब्दों को यहीं विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मुझे पता है हम सब लोग सोमनाथ सर को सुनने के लिए बहुत आतुर है। 2 क्विक छोटी ये चीज़ें हम करेंगे और उसके बाद हम सोमनाथ सर को सुनने वाले हैं। एक अलग अलग स्कूलों ने अलग अलग अभिनव तरीके से बस का स्वागत किया। कुछ स्कूलों ने जैसा हमने देखा लेजिम वगैरह का प्रोग्राम हुआ, ऐसा ही एक अनोखा वेलकम IES गर्ल्स हाई स्कूल
परतवाड़ा में अचलपुर गांव में हुआ था और वहाँ की हेड मिस्ट्रेस आज हमारे साथ है। मैं चाहूँगा कि वो संक्षिप्त में एक अपना अनुभव यहाँ शेयर करें। विद्या मुरेकर जी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्येचा आराध्य दैवत मा सरस्वती समोर नतमस्तक होते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व। पृथ्वी मातेला वंदन करते, भारत मातेला वंदन करते। व्यासपीठावर विराजमान आदरणीय सर्व गुरुजन व्यक्ती, सायंटिस्ट, वैज्ञानिक या ठिकाणी जे आलेले आहेत, सोमनाथजींचं मनपूर्वक विदर्भात इस्रोतर्फे आपण आलात, विज्ञान भारतीने आपणाला बोलावलं आणि विदर्भातील सर्व मान्यवरही आपलं स्वागत करत आहेत। मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी विज्ञान भारतींचा सर्वप्रथम आभार मानते आणि छोटासा एक अनुभव सांगते। पहिल्यांदा इस्रोची ही जी बस येणार होती ना, ही आमच्या शाळेत येणारच नव्हती मुळी, ही वेगळ्या शाळेमध्ये येणार होती आणि आदल्या दिवशी चार की 5 दिवस आधी मला कळते की IS गर्ल्स हायस्कूलचं नाव इस्रो बससाठी आलेलं आहे। एवढी मोठी संधी, इस्रो बस माझ्या गावामध्ये येणार, माझ्या छोट्याशा शाळेत येणार। माझ्या शाळेमध्ये सोमनाथ जी मेरे स्कूल में मेलघाट की बच्चियाँ, मेलघाट की म्हणजे मेलघाट, मेरे हिंदी बहुत अच्छा आता नहीं है, मेळघाटच्या पायथ्याशी आमचं वसलेलं गाव परतवाड़ा, तेथील आदिवासी लड़कियां हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ऐसी कुछ विलक्षणीय बातें अगर होती है तो उनके लिए वो बहुत ही, जैसे उनके आंगन में चांद सूरज तारे उतर आए हो, ऐसा कुछ अनुभव हमने उन लड़कियों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी म्हणजे त्यांचा जो आनंद होता ना त्या मुलींचा, मी तुम्हाला तो वर्णन करून सांगू शकत नाही। इस्रो बस आपल्या शाळेमध्ये येणार आणि आपल्याला ती तयारी करायची आहे। अवघ्या 4 दिवसांमध्ये 5 दिवसांमध्ये आम्ही ती तयारी केली आणि आदल्या दिवशीचं स्वागत माझ्या मेळघाटमधल्या मुलींनी आदिवासी नृत्य करून शेकोटी पेटवून, अक्षरशः सुंदर शेकोटी पेटवल्या गेली आणि पहिलं स्वागत जर कोणाचं झालं असेल तर त्या बसचं केलं। अगदी गेटवर बसला ओवाळून अक्षवाण करून हार फुलांनी त्या बसचं स्वागत झालं। त्या बसमध्ये येणारे जे चालक, ज्यांनी 6 महिने म्हणे ते कंटिन्यू ती बस आपल्यापर्यंत पोचवत आहेत, आमच्या शाळेने त्या चालकाचं, त्या वाहकांचं आणि त्यांच्यासोबत असणाऱ्या सगळ्या लोकांचं त्या दिवशी स्वागत केलं। आणि मला त्या मुलींचा आनंद तुम्हाला सांगावासा वाटतो। मुली सकाळी शाळेत होत्या आणि संध्याकाळी बस येणार म्हणून परत तयार होऊन आल्या आणि तिथेच आम्ही सगळ्यांनी डबा पार्टीसारखे अरेंजमेंट केले आणि सुंदर बसचं स्वागत झालं। दुसऱ्या दिवशीचं सकाळी 7ला बस ओपन होणार आणि काहीतरी बसमधलं विलोभनीय असं आपल्याला पाहायला मिळणार। आमच्या शाळेतल्या मुली सकाळी 7 वाजल्यापासून संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत नुसत्या बसल्या होत्या। का तर इतकी प्रचंड गर्दी होती त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची आणि इतर शाळेतल्या विद्यार्थ्यांची। म्हणायला 100 विद्यार्थी सांगितले होते, शाळेने 500 600 सगळे विद्यार्थी आणले आणि बसला बघताना तेथील आतील जो आनंद, त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रगल्भ करण्यासाठीचा जो आनंद काही लोक घेतात आहे। इथे वैद्य बसलेला आहे, त्यांनी जे काही समजावून सांगितलं त्यावेळेस आणि माझ्या शाळेतल्या 5-6 मुलींना तयार करण्यात आलं त्या ठिकाणी सांगताना, तर तो जो अनुभव त्या मुलींनी घेतला ना तो विलक्षणीय होता। माझ्याकडे एक अटल लॅबही आम्ही घेतलेली आहे। अटल लॅबमध्ये आधी केवळ 10 मुली जायच्या आणि इस्रो बस आल्यानंतर आता तिथला आकडा 50च्या वर गेलेला आहे। माझ्या मुली तयार झाल्या हो। ही इस्रोची खरी
म्हणजे इस्रोचं जे काही काम होतं, त्यांचं जे विजन आहे, ते विजन माझ्या मते या ठिकाणी खरोखरी त्यांचं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे. आणि असंच यांचं स्वप्न वृद्धिंगत हो, तळागाळातील विद्यार्थिनींपर्यंत इस्रो पोचतं आहे, हे आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. माझ्यासाठी, माझ्या शाळेसाठी आणि तेथील सर्व लोकांसाठी ती अभिमानाची बाब होती. आणि आमची अशी अजून एक इच्छा आहे की एक दिवसासाठी बस आली आणि हवा तो आनंद सगळ्या विद्यार्थ्यांना घेता आला नाही. समजा परत असं एखादं मिशन येईल आणि एक दिन के बजाय अगर 2 या 3 दिन विदर्भ को मिलते हैं, वो भी पर्टिकुलरली अमरावती अचलपुर तालुका को मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ ले सकेंगे. और मैं ऐसी आशा करती हूँ आपसे कि अगले साल या 2-3 साल बाद अगर ऐसा कोई आपका दृष्टिकोण होगा तो आप ज़रूर ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा बच्चे ये देख सके और अनुभव ले सके, क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है. मुझे ऐसा लगता है की विद्यार्थ्यांना इस्रो समजून घ्यायला खूप वेळ पाहिजे. इस्रो समजणं किंवा विज्ञान समजणं हे 1 मिनटाचं 10 मिनटाचं काम नहीं है. ये बहुत बड़ा मिशन आपने हाथ में लिया है. सक्सेस आपको बहुत मिलने वाली है. हमारे बच्चे तैयार रहेंगे. आपकी भी मदद हमको चाहिए और आप करेंगे ये विश्वास रखती हूँ. विज्ञान भारती हमारे साथ है और हम आज से विज्ञान भारती के परिवार से जुड़े हैं और आप सब ने मिलकर ये बहुत बड़ा काम किया है. मैं इन सब की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ और यहाँ मुझे 2 शब्द बोलने के लिए दे, इसलिए फिर से आपसे धन्यवाद करती हूँ. विदा लेती हूँ. We have to rush our program a little bit, but one very important activity we have to do. So I'll request to please bear with us for a few minutes. जितने 11 जिले में अलग अलग स्कूलों में बस होस्ट की गई. इसके लिए स्कूल को जो होस्ट थे उनको काफ़ी परिश्रम लेने पड़ते थे. आजू बाजू के स्कूलों को संपर्क करना, उनके बच्चों को वहाँ आने देना, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना. कई स्कूलों ने ये बहुत अच्छा एफर्ट लिया और हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट में जो होस्ट के यहाँ सबसे ज़्यादा विजिटर्स थे उनको हम सोमनाथ सर के हाथों से फेलिसिटेट करना चाहेंगे. ऑलरेडी उन लोगों को बताया जा चुका है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी स्टेज पे आए, वहाँ खड़े रहे, सो दैट आपको वो मोमेंटोज समय पे दी जाए और हम कार्यक्रम के आगे के इसमें जा सके. ऑल स्कूल्स जल्दी से जल्दी यहाँ आए जिनको बताया गया है. You have to climb quickly, fast, please. 11 स्कूल्स इसमें है. चिस्तानंद स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ब्रह्मपुरी, महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल. जल्दी से वहाँ जाइए सर. सब एक साथ खड़े रहेंगे, सभी को एक साथ दिया जाएगा और एक साथ फोटो होगा. लेट्स नॉट. GES जूनियर कॉलेज एंड हाई स्कूल दासगांव, गांधी विद्यालय कोंडा, IES सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल परतवाड़ा अमरावती. उसके बाद न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. मेरे ख्याल से वाशिम और भंडारा से कोई नहीं है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा. अच्छा, दोनों आ गए हैं. ओके, ठीक है. ऑलराइट. न्यू इंग्लिश ईरा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जलगांव जामोद, हैप्पी फेसेस कंसेप्ट स्कूल वाशिम, गुणवंतराव देशमुख कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुसद और नगर परिषद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देवड़ी. सर सभी के साथ एक बार फोटो हो जाए. और if the names get mixed up, let's not worry about it. We'll sort it out afterwards. We need to move ahead. तो सभी स्कूलों को जिनको यहाँ मोमेंटो मिला है, फेलिसिटेशन हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद.
और उनका अभिनंदन भी कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और इतने अच्छे प्रोग्राम को सपोर्ट किया। आगे भी विज्ञान भारती के साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, इसका एश्योरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी स्कूल का धन्यवाद। थैंक यू ऑल। अभी फॉर्मेलिटीज़ ना करते हुए सोमनाथ सर का शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। ही इज स्टिल हियर विथ अस। आई एम श्योर ही इज ईगर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू and interact with you. So without wasting any more time, I'll request Somnath sir to please address the students. मंच पे उपस्थित डॉक्टर शेखर मांडे जी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, डॉक्टर प्रकाश चौहान, श्री सुधीर कुमार, and all the invitee students here. Congratulations first of all for making this event such a beautiful and big one. I would like to thank Vibha Vijnan Bharati for taking the initiative. For whatever Sudhir said, the best was done long back. But the impact it made today by your hard work, your effort and commitment is really phenomenal. And I want to thank Vijnana Bharati for coming out with this idea that we want to do this. They came to me and to Sudhir and we said that yes, let us have this program, and we signed an MOU between ISRO and Vijnana Bharati to make this bus travel far and wide all across the country. And today what we are celebrating in the Vidarbha region is really an eye-opener to us, how people connected to the roots can make an impact. I think for that, I want to thank Vijnana Bharati for that effort that you have taken to bring really an impact out of this small initiative that we have. And I only want to thank those schools, especially those who took the leadership, those who put a lot of efforts to coordinate and then bring all the students here while the bus was traveling far and wide, organizing so many people to come and then watch those events in very short time. I think those who received those mementos, I think they need one round of applause for their hard work. See, what is more important is that the space is able to inspire you people, young people. And all those students here, are you excited? Yes, yes. I think that is what is the sound I want to hear. I think we are equally excited when you people are excited. Why? Because India is making a change. India is making a change that we are going to be a leading nation of the world. And we are going to the one who everybody will look at us with great expectation in the future. India is going to grow from its current position as it's no longer a developing country, it's already almost a developed country, I must say. But then, the progress that is making today is making everybody to look at us with great expectations and hope. It is because of one reason. It is not that because we are becoming powerful by in many ways. It could be an economic power that we are currently at the 5th position. We are going to be the 3rd strongest economy of the world, and we are slowly moving our abilities in many, many sectors and showcasing that we are able to do things. It is because of one reason that we are different from many other nations. That we would like to communicate the message that Vasudhaiva Kudumbakam. Though we keep our identities intact, we would like to encompass everybody in our folds to become the Vishwa Guru. I think this is why everybody has a hope on our nation. Even if we become powerful, we become strong, there is no threat for anybody.
I think any country can talk about it like that. I think no one else. And this is something that we want to tell the whole of the world. And for making this happen, there is something very, very important thing should happen. That future belongs to those who embrace technology. Future belongs to those who are able to understand the impact of technology that can make impact in economy, in welfare of the people, and also the progress that we have showcasing. One example that all of you know is the digital revolution that has been brought in this country. And today, we are one of the largest digital transactions happening in the world. We are number one in that. When the COVID came and every economy of the world was in shambles, and this is one nation, though we suffered quite a lot because of the COVID, we were able to recoup and come back because our vaccines that was made to here was able to be administered to all those who really needed it. And we were able to handle the economic crisis that loomed in front of us in very effective manner. And everybody looks at it, yes, here is one nation, though it actually affected by COVID, was able to stand up and bring back its economy back on track. It's a wonder that has really happened. So we have the biotechnology sector, which is making really an impact in terms of the medicines, vaccines. We are also making impact look at in agriculture. Though we are a country now, 140 crore plus people, we are started exporting our food grains outside. It's not an easy task. Just look at the times that when we were independent, we had famine. Though we were only 35 crore people, we were struggling to reach the food to people at those times. Today, because of the infusion of technology and infusion of approaches that will make our sustainable agriculture possible, and our food production and the storages and many other implemented schemes, that we are able to handle agriculture as a very important domain where there is a profitability, there is sustainability, and we are able to feed all our people. Look at the initiative that we have taken for electronics now. The first of the chip manufacturing unit is just being starting in India with huge investment and support from the government. Why I am telling all of this is to realize that India is changing and India is embracing technology as an important element to drive our growth to ascend to the real leader of the world. And space is a torchbearer. The space technology that we are working on, especially the one which we launched, the Chandrayaan-3, our ability to soft land on the southern part of the moon, the very first nation to do so, is an example to the world. Because you realize that Chandrayaan-3 was not achieved with anybody's great help. Of course, there are friendship across the world that helps us in many ways, but this is a technology developed within this country. The Chandrayaan-3 craft was designed, built by Indians in India. The rocket that launched the LVM-3 was designed and developed by us in India. And we launched it from India, and we reached the moon precisely, using our own knowledge and our own skills. So it is something that was done by Bharat for our own cause and our own frugal engineering, which everybody looks at how could you ever do this mission with such a low cost? It is again a question which I listen whenever a foreign delegation comes to India, especially from spacefaring nations. They come and ask us, what is the magic that you have with you to do it at low cost? I can only smile at them. I can't tell the secret to them. See, we know how we look at every aspect of our life. We have been learning this to live with whatever minimal resources we have, but do fantastic things. It comes out because of our inherent nature of commitment. It is because of the type of interest that we are able to create in the people who work in space sector. The enthusiasm, the energy is really the one which makes all of this happen. And we would like to tell you people that ISRO, we would like to transfer that knowledge to larger segment of the society, especially children. The vision that has been given by our Honorable Prime Minister in front of us after the Chandrayaan-3 mission is really fantastic. He said in the next 25 years, the space sector should grow significantly bigger. Today, the Indian contribution to the overall space economy is just 2%. Just 2%.
It is almost 450 billion US dollars, but our contribution is very, very small. Though we are doing fantastic things, if you look at the overall space activity happening in the world, we are nowhere. We are in very small bracket. And he prefers that we must work hard to significantly expand it from 2% to at least 10%. Now 10%, it looks 5-fold increase in the activity that we are doing in space sector. If you are to do that, we need more people. We need more innovators. We need more industries. We need more startups. And we need more business to take place in space sector. If this has to happen, we need all of you, you young people, to come to space sector, come in science and technology, come in different application areas, and then use this knowledge and technology for everyday life. Example I will tell you. Agriculture. Those who are doing in agriculture, there is huge amount of capability of a space to help you do agriculture in a very effective manner. One of them, Prakash and his team is doing in terms of crop forecasting. He looks at agriculture, looks at the growth of the plant, he makes estimates for the production, it helps import and export of food grains at appropriate times. It is one important thing that helps government. We can look at space for controlled agriculture. For example, water stressing can be understood, nutritional stressing can be understood, new land area where we can do agriculture can be understood for different types of crops. Even for Vidarbha region where you have a fruit-bearing estimates, still space technology can be used, which will help you in looking at disease, look at pesticide applications. In terms of resources management, all of you know, space is one of the important component where we can work and help decision makers, planners, and to help them to do it better. Infrastructure development like roads, railways, bridges, and power lines, space has been helping us. And space continue to help us in the domain of communication, imaging, and your television broadcasting, internet services, strategic elements, your security. I think all of this space has an important role. And we want this to spread to many, many parts of the country. Our country is still a rural economy where large amount of people are still living in areas where we have connectivity issues. And we want to make use of space sector to help them. We want to make the advantages of the support of the government to reach them directly through digital transformation. And space remains as a backbone of this digital revolution, digital change. And we would like to reach education to everybody. If somebody is not able to do, we would like to ensure that space is available to help them. We would like to ensure medical help out and support. Space can play a role, especially in remote areas. And I would like to tell you, all of this are possible only if you come in large numbers to create new enterprises, new startups, new companies. And we want people to learn science, technology, engineering to come to this sector. Find out how innovation in this domain can expand the space sector substantially. This is the vision we want. And for all of that, ISRO wants to do very innovative and inspiring missions in the future. We have just done Chandrayaan 3. After that, we immediately did the Aditya L1. All of you know that we have gone to study the sun, which is a very interesting mission to go to Lagrangian point and put our satellite there, and it is doing observation of sun very well now. We did immediately after that, we did an XPOSat, X-ray polarimeter satellite. And the big ticket mission we are going to do is the Gaganyaan program, the human space program. And astronauts are ready. Possibly all of you have seen our Honorable Prime Minister giving them wings and declaring them as Indian astronauts for flying in Gaganyaan. And we want to make this mission happen next year. And not fly once, but fly many more times. And many more astronauts have to be created. They have to be trained. Because we want to build a space station in the future. And we want to build it as an Bharati Antariksha station. Put it there, the first module should go in 2028, and we should complete the construction by 2035. And our astronauts should go always continuously there and do experiments. For what? Experiments to help us in many domains of technology, like material sciences, like the biological sciences, medicine synthesis, human organ printing. I don't know, but there are many, many scientific domains that microgravity environment give you to do studies. And we want scientists to identify this research and come to this sector and do some activities. And all of this will have economic activity linked to the businesses and money. I think this is the connection that we want to build in space sector.
And we also put a goal, as Honorable Prime Minister has already declared, is to land an Indian on the moon in 2040. So if that has to happen, we have to start working today onwards. We are already on the job. We are already on the job of designing and developing systems to enable us to go to moon in 2040. And when that happens, I think all of us who sitting in the dais may not be the people who are leading. You are the people going to lead that activity. And we want leadership to come here from your people, from this India, from these villages, from rural backgrounds. There are leadership, there are brilliant minds, and we want to identify them. We want to pick them. We want to help them to have dreams. We want them to pursue studies. We want them to identify that it is possible for everybody in India to aspire to become somebody like me, if at all you are desiring to be so. To work in space sector, to work in other domains of technology, to contribute to the nation building. I think for you to inspire them, there is ISRO, there is VIPA, and we have joined together to make a small impact in society like this. And I'm very happy today that that change is happening all across the nation. I think the work that we are doing is very, very minuscule, but its impact is significant. I am very happy about, because the volunteers, the contributors, the hard-working people, it is not the display items that is in the bus that is more important. It is the attachment, it is an inspiration, it is the story behind that is in that bus. I think all of you know ISRO is a huge organization. We have 17,000 people, scientists, engineers, and many other type of people spread across the country. All of you should know that we are able to build rockets, whatever we wish to build today. We can build whatever satellites that we want to build, and we can make a launch from our country. It's not a small capacity that we have developed. When Americans were going to moon in 1960s, we were launching small rockets. Today, we have landed on the moon. No one else has gone. I think it is not a small capability that we have developed. The 60 years of gap that existed between the one who went to the moon at that time to us today, I think that has been narrowed significantly by us. It is by the hard work of the people in India. I think all those people who have worked in the space sector needs a great congratulation. And possibly you should also know the work done by other scientific establishments of this country. We would like to ensure that you get educated on all the possibilities. For example, the Department of Science and Technology, the Department of Scientific and Industrial Research, and other scientific establishments like Atomic Energy and many others who are working in this country, they are doing yeoman services in creating such talent pools. And they are all possible for you people from any region of this country to aspire to be there, contribute and work for our nation building in various ways. And this is possible only if you are able to send that message to each and every one of you, saying that it is done by us, and we have the takat, we have the strength, we have the capacity to do it in India. I think this confidence is something which I like to tell you through this travel of this bus. It only showcases some models that we are able to develop and show is here. But you remember that it is all done by Indians. I think this is a pride that we must possess. And I'm very happy about the travel of these 6 buses that is happening all across the country. And I am sure we will come back with this bus with another edition of displays and models that will be of modern nature than what we have put it now. The work which we have done, like in Chandrayaan 3, the Aditya are not displayed in this bus. I think you know that it contains models of the rockets and satellites which are of traditional nature. I would like to tell you, in the future we will come back with more scientific content in it. For example, what we have done, going to moon and how we are going to extract samples from them, how we are going to work in space station, and how we are going to build scientific work in microgravity environment, what type of reusable technologies that we will develop in the future in the rocket, what type of advanced technologies that we will put in our satellites when you are going to build in the future. I think all of these are something that you must learn. The world is changing significantly. I think all of you should know the technology is coming in big way. You know, artificial intelligence is amongst us. The material technology is changing so drastically that additive manufacturing has come in a big manner that is going to disrupt the manufacturing areas. The medical diagnostic technologies are changing so dramatically. The tools for electronics and software is also changing in a big manner. I think the world is changing in a manner that the space technology is behind it. You would be watching
in many areas like the strategic areas like wars which are being waged, the space becomes very important strength for any nation not to wage a war. For example, to control invasion, aggression, secure our nation, it becomes very, very important for all of us to have that capability. I think all of this put together, I want to conclude saying that I want all of you to get inspired to read about that capability that you have developed in various sectors in scientific establishments. Find out what suits you best. Aspire to become somebody who can contribute in this domain to this area. I think there are plenty of opportunities open to you in this country. Our economy is expanding and opportunities are not going to come down at all. I think this confidence we would like to tell you, and thank you, Vibha, for being part of our journey. We would like to take this activity in a continuous manner in the coming days. So with this, let me thank once again, and I will be happy to answer any questions that you have today. Okay. Yeah. Huh? Hello, sir. I want to ask the question that from when we should start for practicing to be a scientist? In which class you are? Fifth. Fifth. Okay. So you start from today. So are you ready to start from today? Yes. Yeah, okay. Then once you are ready, then you are already on the job. See, the scientist doesn't happen all on a sudden. It happens on a continuous mode. So the first quality that you need is high level of learnability. You should be able to ready to learn. So are you studying everything from schools? All your syllabus you are studying very well? Yes. Okay. But are you reading beyond the syllabus? No. Okay. The first technique to become a scientist is don't limit your reading to your textbooks. Are you ready to read beyond it? Because plenty of material is available for you to study. Yes. Have you read anything about artificial intelligence? Do you know what is it? Even a 5th standard student can answer. There is no difficulty today. So the first lesson for you is to read beyond your textbook. Textbooks are to be read because you have to become first in the class, no? Yes. Are you already? No. Second? Third? Not necessary. I am going to tell you that you don't have to be first in the class. Be comfortable. Huh? I am not expecting you to become first in the class. I only want you to study the subject very well and write up questions to your teacher. But most important is to learn subjects beyond your classroom. A student who is able to observe and understand the universe beyond your classroom only will become a scientist. Okay? Yes. So you can become today onwards. Yes. Thank you so much. Hello, sir. So my question is, so when will Indian astronauts step on moon? I already told you the vision and the goal already given by our Honorable Prime Minister. He said we must target 2040 as the year in which the Indian should step on the moon. Now it is our task to prepare for it and work for it. Are you ready? Yes, sir. Okay, good. So let us make a decision today that we are going to do it. Thank you. Good afternoon, sir. Jai Swaminarayan. I am Sanskriti from the Swaminarayan School. My question is that in Chandrayaan 3, two parts were missing, which is lander and a rover, which is very essential for a satellite. So how did it work? No, Chandrayaan 3 there was a lander and a rover. It was there. It was not missing. It is said in information is I didn't get the question. The question you are asking is Chandrayaan 3 had a lander called Vikram and a rover called Pragyan. It was there. So where is it missing? Sir, so how did it help us? How did it help in what? How did lander and a rover help us in Chandrayaan 3?
Help in? No, that is what the design is. The lander was designed to land on the moon. Without landing, the Pragyan cannot come out. So unless you achieve the soft landing, the Pragyan cannot come out. So we attach the soft landing. Possibly you have watched the recent mission by an American moon lander. It had 6 legs, but after landing it tipped over, just fell out. And many of the small or robotic rovers which it carried couldn't come out. So the first and foremost thing is that it must land not only softly in the correct orientation. We had also solar panel which was looking at the sun. If it looks 90 degrees away, it cannot even see sun and power generation will not happen. So it's not only landing softly, landing so precisely in the correct orientation, so that, and not in the craters or boulders, it has to land in a plain land. So there were a lot of technology involved in making it autonomously identify where it should land and then go and land very correctly there. So that we achieved using this lander and the rover. Okay? Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Myself is Sriraj Rajendra Barade. Sir, my question is that as you have said that to inspire us there is ISRO, VIPA, books. So, sir, my question is that from where you are inspired? I am inspired by the people like you. Sir, but how? See, I will tell you the story because I was also a child like you long back. Is it not? Sure that no, I didn't come just like this from the heaven. I was a child like you, and I had a father and a mother, and I was in a village. When I was a child, my father used to bring me a lot of books. And in my house, there was no electricity. But the most important part were the books that I got from my father. They were of literature, they were of world-class literature which was translated to my language, the science which was discussed in magazines, the star atlases, and many, many other scientific books. So when I was a school student, I used to read all of them. And when I go to school, I found that what they are teaching, I already have read most of that. And so I used to remain as a good student in the class because I can talk to my teachers in equal terms. No, it was not like that I am learning anything because we were at very comfortable level. So this is a trick I told you. Always read and go well prepared to school on much beyond the textbook. And I used to participate in quizzes and many other events, even in a village school. So I can tell you that the whole inspiration came from the books which I read. I can tell you that when I was a student, I was not only reading the textbooks. In fact, I was reading most of the world classics which were translated and available, like the work of Victor Hugo, the Russian classics, the American classics like the Thomas Mann's books, the translations of our Indian literatures. Mostly at that time there were plenty of novels coming from Orissa, even Bengal, the great writers. And all this I started reading, the travelogues which was available, so I came to know about the nations across the world. So once you start, and also I will tell you one book which I read at that time, I remember, The Universe and Dr. Einstein. There was a book which talked about how his theories influenced the concept of the universe. I think all this inspired me to understand science, technology, and when I went into my college, I made up my mind to choose only science as my career. So the only secret I want to get you to inspired is to read and continue to read. Okay? So my question is that how does ISRO collaborate with other international space agency? There are plenty of collaborations. ISRO has a memorandum of understanding with 60 different nations and also agencies, and we work on various fronts, especially with America, Russia, and the Europeans, the leading space powers, including Japan also. And we have MOUs and understanding with nations which don't have even space activities. So like the Argentina or Mexico, Sweden, and many other nations, Italy. They may not have immediately directly space activities, but they all have technologies. And we do commercial launches for satellites from all those nations. And we engage in scientific exchanges. Our people go and participate in research together. So there are plenty of opportunities. And universities, we connect with across the world in various countries and do joint research in great laboratories. So there are different ways by which we engage. Okay?
Namaskar, dear sir. My question is, first of all, I wanted to know that your opinion about how we humans are polluting the earth and the outer space as well. There's so much garbage on planet Earth and even in the outer space. So in the name of development, we are doing all good things for ourselves only, I believe. But the extinction of different species we've caused and more atrocities like these. So what's your opinion on this? Like many countries, they're thinking of settling humans on other planets, on Moon or Mars or things like that. So what's your opinion on this? Should we do this? Yeah. This will be the last question. We will not be taking any more questions. So please go ahead. I think you touched a very, very important topic that is relevant to the humanity. It's not only for space, it's for everywhere. When human beings started living on Earth, we started consuming the material reserve of the Earth and generated pollution in various ways. You are polluting the atmosphere, you are polluting the Earth, the plastics are fully in the sea, and entire fish flocks are now with the microplastics. It is entering into your system. Same thing happening to space. When you send lot of satellites to space, and if you don't follow discipline, then you are polluting it. And you can continue to exploit the natural resources without polluting it. And this is the only understanding that you need to have. And you must have a certain amount of sense of humanity and also discipline. And this we can impose even in space. So we currently say that we should use single-use plastics, we should not throw away plastics, we should recycle. Same principles apply to space as well. Because we need comfort of life, and hence you need to use all of them. Tomorrow you cannot tell that don't use plastic at all because plastic is such a curse. It's not going to happen because our life is so much dependent on plastic. And don't use space and don't launch any satellites because it is polluting space. Cannot be the answer. The only answer is use it very responsibly. What is the responsible behavior of operating in space? The first and foremost, that you should launch a satellite in very defined orbits and observe it that it doesn't cause collisions with other satellites so that you don't create debris. Don't allow it to explode at any point in time. If it explodes, it creates millions of debris. And after function of the satellite is over, deorbit and put it in the sea so that it doesn't remain in the orbit. If at all it remains in orbit, let it remain in orbit only for a few years. There is a decision to keep it only not beyond 25 years. And similarly, make sure that you don't leave your rocket parts also in space, make them enter. So all these principles are now slowly coming into force, and there is an agreement between nations to work in a sustainable manner. And there is a committee under United Nations called Long-Term Sustainability Space Activities. And I want to tell you, an Indian is a chair of that committee, and we are leading the discussion, and we are leading those, creating those principles by which every nation should follow. And this is a part of the UN COPUOS, which is a Committee for Peaceful Use of Outer Space. And we are going to generate some guidelines, etc., but future generation will not pollute it. And it's already in place. I think many ways we are able to influence so that this is controlled. Okay? Thank you so much. Thank you. Excuse me, sir. I'm Good really afternoon. sorry to ask you one more question. Myself, Ishika. Good afternoon. Since we are looking forward to contribute a lot in space research, what are some various visions as students to look forward, specifically in researching sector, and making it more approachable for enthusiast citizens, along with space exploration? I didn't get the question. Can I once again? What are various contributions the government is making to make researching approachable for the enthusiast citizens? No, that's a very generic question. I don't want to specifically answer because there are schemes. I think those who are interested to work on schemes, for example, in space sector, if you are an entrepreneur, there is, you can go to the site of InSpace and see how startups can get help from ISRO in terms of technologies, incubation, funding, etc. And if you are a researcher, you can go to ISRO's website and look at Respond Basket, how to be part of the research engagement with ISRO. And if you are in an academics institution, there are various technology cells and incubation cells where we can help you to work in space sector. And if you are an industrialist who want to contribute to space, come and discuss with me. I will help you how to show you the way. There are many ways to help you to come to space sector. Okay? So please consider my last Thank you so question. much. Yeah. Myself, Mehvesh Arjuman. I am from Heritage International School. Come here. You are the last person, huh? Come.
afternoon. I want to be an second Kalpana Chawla from India. What qualification does ISRO require for become an Indian astronaut? You are already qualified. Because you are aspiring for it, right? The first and foremost is the aspiration to become. I think the rest will happen on its own. Today, the astronauts are coming from Indian Air Force. They are pilots and they are trainer of pilots. But that's only today. Tomorrow, maybe when we start our human space program in a continuous manner, by the time you become maybe 20 plus or 25 plus, at that time, I think we will have research scientists. If you are successful becoming an IAF pilot, of course you have a great chance. But if you are not becoming also, if you are becoming a scientist, you can become an astronaut scientist. You can become a scientific specialist to go on board and become an astronaut. Because we are starting space station. In a space station, you can become astronaut to do specific instruments and do some work in, you can become a biology scientist, still become astronaut. You can be a physicist and becomes an astronaut. You can become an astronomer and do some experiment. You can be a material scientist, a metallurgist, still become an astronaut. So one quality you need is you must be highly qualified domain expert in some domain, and you must be physically very fit. So every day morning you should run and make your healthy body. Because going into space is not easy. You need to have many physical qualities and also your professional qualities. These two are met, I think we will definitely consider you. Thank you, sir. Okay. Thank you, Somnath sir. Just a quick request, sir, just for 2 minutes. Bhaskar sir and Shah sir, please run to the stage. Bhaskar sir and Shah sir, please quickly come to the stage. These are the two persons who were instrumental in ensuring that the souvenir comes through. So I request Somnath sir to quickly hand it over to them, please. प्रोग्राम के अंत में हम वंदे मातरम लेंगे. सोमनाथ सर को अभी जाना है अर्जेंटली. हिज फ्लाइट शेड्यूल हैज चेंज. सो सोमनाथ सर आप विदा लेंगे या हम वंदे मातरम शुरू करें? ओके, विल हैव वंदे मातरम. सभी लोग खड़े हो जाए. आकाश, ओके. वंदे मातरम बोलने वाली 3 बच्चियाँ जल्दी से स्टेज पे आइए. विल हैव द वंदे मातरम. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरम्.
श्यामलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां शरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। भारत माता की तिथेच राहू द्या ना.